Pari, what would be the central idea of this poem, Fog? Um, so basically, they're talking about that they have compared fog with a cat, like how cat comes slowly and gradually and without making any noise. So there's no grand entrance or any noise when fog comes. It comes very silently and very pleasantly, and we usually see fog, but we're not able to um, memorize when it. We were not able to. Uh, we just see the beauty in the unusual things. Basically the fog is unusual, but then since it is very unusual, the poet used this term to write a poem on it. Okay. Now, see, look at the theme of this poem. The ethereal. Ethereal का मतलब क्या होता है? Something which is very beautiful, something which cannot be described. Beauty beyond words. The ethereal, enigmatic nature of fog and its effect on the senses are the central themes of Carl Sandburg's poem. Okay, this is the poet Carl Sandburg, and it's a very small poem. According to the poem, the onset of fog is likened to the appearance of a silky gray blanket that covers the city and muffles sounds to produce a sensation of calm and silence. So basically, when there is fog all around, we generally have peace all around and there is calmness in the environment. There's no hustle bustle, there is no loud music, there's no loudness around us. So everything is silent and serene and beautiful. The poem addresses the notion that fog has the power to change the familiar into the foreign and to hide the world's reality. So basically, fog is very powerful because it can hide the reality of the world. Because slowly and gradually, when the fog lifts, only then we see the reality. You see fog in winters, you see, right? And there is zero visibility at some time at some point of time, there is zero visibility. Now, when there is zero visibility, don't you think when the sun shines again and the fog lifts, only then you can clearली see your surroundings. सो वो एक बहुत मजाक के तरीके से कह रहे हैं कि फॉग इतनी पावरफुल है कि वो रियलिटी को ढक देती है. इट कवर्स द रियलिटी लाइक अ ब्लैंकेट अनटिल इट लिफ्ट्स इटसेल्फ अप. मतलब जब तक वो वापस चली नहीं जाती तब तक वो रियलिटी थोड़ी सी हिडन रहती है. एंड देन या देर इज अ कांस्टेंट कंपैरिजन ऑफ फॉग विद दैट ऑफ कैट. द मोशन इज सेम. जैसे कैट की मोशन होती है वैसे ही फॉग की मोशन होती है. द पोएम emphasizes how nature may change us and affects our senses and emotions. This line is just similar to the poem that we did, Crow one. Yes. Dust of snow. Dust of snow, yes. Okay. And And what do hmm, you line? what Power to change the familiar into foreign. what? Power to change the Ability to familiar hmm. into foreign. Familiar मतलब जो Means like hmm. the environment that is covered, basically we are familiar to the environment, but now when it is covered, we are not knowing those things. We are becoming foreign. Like foreign means unknown and familiar means we are familiar with that. Yes. Now the poet says that the fog which is generally seen during the winter season is coming towards the city and the City. harbor just like a cat. Pari, start reading. This means Yes. This means that it is approaching the city in a very silent manner so that no one can notice its arrival. He has compared its arrival to that of a cat because a cat always enters a place silently. Next, he says that the fog has covered the whole of the city and harbor, and it appears as if it is sitting by folding its legs and looking around just the way a cat does when it sits on the haunches and look around. At the end, he describes the departure of the fog, which is very silently and unpredictably, again similar to the departure of the cat, vanishes. okay. Look at the picture that is shown. Fog, everything is hazy. And sometimes, as I told you, the visibility is zero. That means कुछ भी नहीं दिखना. So that depends. The fog comes on little cat feet. मतलब on little feet. That means very slowly, unnoticed.
मतलब जब फॉग का अराइवल होता है इट इज नियरली अननोटिस बिकॉज द फीट आर वेरी स्मॉल. इट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटीज का मतलब फॉग ने फॉग आई और फॉग बैठ गई जस्ट लाइक कैट, बहुत साइलेंटली बैठ गई. उसके बाद वो बैठ के क्या कर रही है, इट इज ओवर लुकिंग सिटी एंड दी हार्बर. वो सिटी को देख रही है, हार्बर को देख रही है जस्ट लाइक कैट डज. On silent haunches. What is haunches? Sitting with knees bent. See, like this. This is how cats sit, right? ये देखो. This is the picture of a cat. See? So this is haunches, right? Hmm. Please write down the meanings side by side, okay? It's just a posture sitting on your lower, like hip area. Sitting with knees bent, they have written, yeah? On silent haunches and then moves on. That's all. Palak, read. Mm. The poet is describing The poet is describing fog. Fog is a thick cloud of tiny water droplets present in the atmosphere. It is generally seen during the winter season. Here, the poet describes the advancement of fog towards the city and the harbor. He says, the fog comes like a cat comes on its little feet. This means the fog advances towards the Advancement. city. Advancement means movement. Advance. This means the fog advances towards the city very slowly and calmly, just like a cat. One never knows how and when the fog will enter the city. Therefore, fog is compared to the cat which enters our home in an unpredictable manner. Hmm. Next, he says that the fog sits over the whole of the city as a cat sits silently by folding her legs behind itself and looking around the nearby places and things. Similarly, it seems that the fog silently covers the whole of the city and the harbor and is sitting over them looking around like a cat. After a while, the fog leaves the city and move on. The poet says so because it is a natural phenomena that fog does not say stays at a place for long and leaves the place after a few hours. So here also the poet says that just like a cat, the fog leaves the place very silently without being noticed by anyone. Yes. Now, without being noticed by anyone, for this, what you can write? Unnoticed. What you can write? Unnoticed. Unnoticed. Now, first, you can say without being noticed. This you can write unnoticed. Okay? Now they're talking about movement of fog Hmm. compared to. You Cat. Cat. can write down the pointer so that whenever you're revising the poem, you should know what all you have to revise. Compared to the movement of a cat. Pari, can you tell me what are the similarities between the movement of cat and fog? Yes, ma'am. So, they says that cat comes very slowly, very silently, and Mhm. similarly, fog comes very naturally, very slowly and silently, and it covers the city and the hub. Yes. And they sit on the haunches just like a cat. Now, I just told you that on little feet, this one, on little cat Yes. feet. What does this mean? जस्ट लाइक अ कैट, बेसिकली ऑन लिटिल कैट फीट का मतलब हुआ कि जो फॉग की एंट्री है इट इज जस्ट लाइक द मूवमेंट ऑफ अ कैट.
Can you see the next line? It sits looking over harbor and city. Hmm. So, is there any figure of speech here? Personification. Yes. Why personification? Because first they are Because placing, like sitting using work is it. persons and not by their Yes. fog. So, they are comparing fog with a cat, first thing. Secondly, they are saying that fog comes and sits. That is not possible. So, we are giving a human quality to fog. So, that is personification. Okay? I'll just Hmm. underline. You also please underline these things in your book itself and write down. The fog comes on little cat feet. On little cat feet, you have understood? Just do it this way. Sits looking. It sits looking. This is personification. And you have understood Over why? not no? Hmm? Not over harbor and the city. Only just Mm-hmm. it's It sits looking. looking because sitting is the quality. Like it is something which associates it with a human being. Over harbor and city on silent haunches, you have understood that means sitting with legs folded and then moves on. Okay? तो जो movement भी है ना, coming and going of fog, that is also part of personification, right? Okay. क्योंकि we have this quality, we can go somewhere, we can come and then go. Done? Hmm. Okay, yes, let's look at this. Literary devices. Metaphor, fog is compared to cat on little cat feet. Please write it down in Yes. your book side by side. Metaphor. Rhyming scheme, there is no rhyming scheme. It's a free words. Free Please verse. underline. Free words का मतलब कुछ rhyme नहीं हो रहे poem में. All the lines are independent of each other. Enjambment, you already know, moving from one line to other line without any punctuation mark. Okay? And personification we have already done कि जो fog है, fog को पूरा का पूरा personify करा गया है. Fog is personified because it is getting associated with human activities like coming and going, sitting, and then looking over harbor. चार चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन की हैं और वो हमने फॉग को दी है. There are four things. What all? Coming, going, sitting, and then looking over the harbor. Done, Paripalak? Hmm. Okay, let's look at this. The main themes in the poem Fog for class 10 are quiet and mysterious power of nature. You have to write these things. Mysterious matlab that nature has something very magical in itself. It's transient and subtle presence. Transient का मतलब क्या होता है? Transparent, or we could say not permanent. Yes, something which is not permanent. It's transient and subtle presence. Subtle मतलब very simple presence. And the way it can be metaphor for life's change. अब इसमें life का change कैसे बताया इस poem में? मतलब like how will you explain these things? How are these Basically, things portrayed that in? in any person's life, obstacles will be there, Yes. and we just have to
reflect on it. We just have to sit, we have to just think for a while, and then we have to move on in our life. वेरी गुड. नाउ आई कैन शेयर द बोर्ड. पता नहीं है या नहीं. ओके. आई जस्ट आई यूज टेक्स्ट हियर. जो परी ने बताया दैट्स परफेक्टली फाइन. सो फॉग हेयर इज ऑल्सो. यार ये पेन चेंज क्यों नहीं होता है? फॉग हेयर इज ऑल्सो symbolic of symbolic of Challenges, obstacles. obstacles in life. Obstacles. ठीक है. Fog also represents the period in our lives when nothing is clear. Period in our life when nothing is clear. You can say chaos hai, yes, you can say no clarity, no hope. Yes, no hope also. इसका मतलब क्या हुआ? अब नाउ सी यू आर टू यंग टू फेस दीज थिंग्स और टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू. नाउ फॉग क्या सिंबलाइज कर रही है? प्रॉब्लम्स, एज परी सेड. प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स. प्रॉब्लम्स वो कह रही है बहुत स्विफ्टली आती है. अब कीपिंग असाइड मूवमेंट ऑफ फॉग एंड कीपिंग असाइड मूवमेंट ऑफ कैट, देयर इज अनदर मूवमेंट दैट इज मूवमेंट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन आवर लाइफ. अब परेशानी बता के तो नहीं आती ना, राइट? एकदम से कुछ हो गया तो दैट इज सडन. एकदम से किसी का एक्सीडेंट हो गया, एकदम से किसी के घर में कुछ हो गया, एकदम से किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई. सो ऑल दीज आर in just a fraction of second. So now you can relate the movement of cat, movement of fog, and movement of problems. Problems also come very swiftly into your lives. They don't announce before coming. They just knock at the door and they're like, "Hi, I'm here." वो वाली चीज है कि मैं आ गई हूँ. ठीक है, ये होती हैं प्रॉब्लम्स. तो बहुत धीरे आती हैं. नाउ अब प्रॉब्लम्स ने अराइव कर लिया हमारी लाइफ में. एवरीथिंग विल स्टार्ट बिकमिंग हेजी, अनक्लियर. आप डरे हुए होगे बिकॉज देखो, देर आर पीपल हु आर वेरी स्ट्रांग एंड दे फाइट विद देयर प्रॉब्लम्स, बट एट द सेम टाइम देर आर पीपल हु लाइक दे आर completely hopeless when they're confronted with any kind of problem. तो इसका मतलब क्या हुआ? पोएट आप मतलब दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट प्रॉब्लम्स विल कम स्विफ्टली. दे विल ऑल्सो मेक एवरीथिंग अनक्लियर. अनक्लियर का मतलब जब आप प्रॉब्लम में होते हो आपको कोई होप नहीं होता, आपको कुछ नहीं दिखता कि यार मैं इस प्रॉब्लम से निकल भी पाऊंगी या नहीं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ. देयर इज अ लॉट ऑफ chaos, confusion. So people are rendered helpless. ठीक है, उन्हें कुछ Hmm. नहीं दिख रहा उस टाइम. कुछ ना दिखना इज अगेन फॉग. कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, या हो सकता है थोड़ा बहुत दिख रहा हो, हेजी. ठीक है. नाउ अब पोएट क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ गई, वो बैठ गई आपकी लाइफ में. अब वो देख रही है सब कुछ, वो आपको भी देख रही है, आपके बिहेवियर को भी देख रही है. आपको याद होगा हमने एक पोएम करी थी, आई डोंट रिमेम्बर विच ईयर. विंड. आई थिंक लास्ट ईयर वी डिड, है ना? Last. विंड फ्लरिशेस एंड देन इट वीकेंड्स द वीक पीपल. वीकलिंग्स वर्ड था उसमें. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीक पीपल हैं वो उनको और वीक बना देती है प्रॉब्लम के वक्त. But the strong people, they flourish. So basically, fog also comes and sits. It tests you कि how you are behaving in that moment of time, and then it will slowly go away. थोड़े टाइम के लिए, for some time, everything, your vision will be unclear, everything will be unclear, but then after that, everything will be clear again because the fog will simply move out. It will go away. Now, the period for which fog is resting, or the period for which the fog is sitting on its hunches, can vary. हो सकता है पलक की लाइफ में वो फॉग का पीरियड 2 दिन का हो, परी की लाइफ में हो सकता है वो 10 दिन का हो सकता है काम्या की लाइफ में वो 1 साल का पीरियड हो.
तो फॉग का जो पीरियड है इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट द ओनली थिंग दैट द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे दैट दीज थिंग्स आर इनएविटेबल। अब सर्दियों में फॉग होगी ही होगी, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, अगेन सेम थिंग्स, इनएविटेबल। दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर, फर्स्ट थिंग, नॉट परमानेंट, ये भी आपको लिखना चाहिए। प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी, ठीक है। यू हैव टू फाइट द प्रॉब्लम्स एंड दे विल कम साइलेंटली, दे विल गो साइलेंटली, बस, नथिंग एल्स। तो अब कई बच्चे क्या करेंगे, वो सिर्फ कैट से कंपैरिजन कर लेंगे, बट जो इनर मीनिंग है वो तो प्रॉब्लम्स का है ना, because the poet is trying, abhi I have told you a lot of times that we have to read between the lines while doing any poem। इसका मतलब क्या होता है कि जो सामने दिख रहे टेक्स्ट उतना ही नहीं है मीनिंग, देयर इज अ मीनिंग हिडन, you have to dug deep to understand that meaning। is it clear? hmm Hmm. Nature's silent and subtle presence, ट्रांजिएंट्स एंड इम्परमानेंस। जो ट्रांजिएंट होते हैं ना, इसका मतलब यही होता है जो हमने लिखा है, टेम्पररी। ट्रांजिएंट मतलब एवरीथिंग इज Temporary. टेम्पररी। obscurity and clarity, the fog represents moments of confusion। I already told you confusion, देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है clear, nothing is clear, chaos, no clarity, तो ये इन्होंने भी लिखा हुआ है। uncertainty in life, this word is also very important। इसकी मैं पिक्चर ही क्लिक कर लेती हूँ, आई थिंक, एंड आई जस्ट शेयर इट इन ग्रुप। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। obscurity, however it eventually moves on just as problems and unclear situations too, ठीक है। स्ट्रेंथ की भी बात कर सकते हो आप, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ कंफ्यूजन एंड chaos you have to be powerful, you have to Powerful. show your strength, you have to fight the problems, because eventually, अभी हमने पढ़ा चाहे वो खुशी हो चाहे वो सैडनेस हो, सब कुछ टेम्पररी है। अगर आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि भाई मैं तो बस संभाल ही नहीं पा रही अपने आप को, वो भी टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट। बट हो सकता है किसी की लाइफ में वो फेज अभी आ जाए, किसी की लाइफ में वो फेज बाद में आ जाए। हो सकता है अभी मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड हो और बाद में मेरे को खुशी मिले, और या हो सकता है कि अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मुझे आगे जाके स्ट्रगल मिले। सो इट्स अ वेरी रेयर थिंग कि कभी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम ही ना आए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी, the poem's concise and minimalist style suggests that beauty can be found in simple or natural phenomena and in the quite profound moments of life। मतलब बहुत ही जो simple moments of life होते हैं, they are also very beautiful, वॉक पे जाके आते हैं बस, ठीक है। ठीक है। Now, transformation and acceptance. The poem explores how natural phenomena can change our perception and invites reflection on accepting these changes। इसका मतलब क्या हुआ कि you should be open to changes। Changes are bound to happen। You cannot be rigid। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो no rigidity in life। rigid का मतलब क्या होता है कि फिक्स हो गई मैं तो, कि नहीं ऐसे ही होते हैं, नो, यू हैव टू bend in the environment, ठीक है, according to the environment। I think that's all। समझ आया थीम, वर्ड्स, लिटरेरी Yeah. डिवाइसेस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। Hmm. अच्छा, एक चीज और हो सकती है, लाइक बिफोर, like before something really good happens in your life, you have to go through a lot of things, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक एम सेट हो गया, यू हैव सेट योर एम हियर, दिस इज योर एम, ठीक है, एंड दिस इज यू, ये आप हो। नाउ व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट योर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए to point B cannot be smooth, first thing।
देयर विल बी मोमेंट्स ऑफ कंफ्यूजन जो यहाँ पे आ सकते हैं। आई डोंट नो, ये पेन को डिसअपीयर होने का बहुत शौक है। यहाँ पे आ सकता है कंफ्यूजन, यहाँ पे आ सकता है कंफ्यूजन, या फिर हो सकता है जब आप एम के बहुत क्लोज हो यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाए। कभी भी हो सकता है, या हो सकता है वो दो बार ही आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, फिर सब स्मूथ चले और फिर से आ जाए। सो दिस इज द कंटिन्यूअस पाथ टिल यू रीच योर एम। ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि these moments you should cherish because these moments are also special because they teach you a lot of things। जब आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी ना, तो आपको लड़ना आता है, आपको स्ट्रांग बनना आता है। बिकॉज देखो, सिंपल सी बात है, आज मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मैं किसी भी चीज को वैल्यू नहीं करूंगी, आई विल नॉट वैल्यू एनीथिंग इन लाइफ। बट अगर Hmm. प्रॉब्लम्स होंगी तो मुझे पता होगा कि यार these things are important, or these things, like I am blessed, I will have that feeling of gratitude. Okay? So problems are also very important because they teach you a lot of things in life. Clear? Yes. Okay. Any doubts in this poem? Paripalak? No, ma'am. No? Okay. Now we can do Madam Rides the Bus, or you want to do Money and Credit? Anything you want. I'll take up that. Um,